The tone is already set, and we understood various things like how we process, what are the additives we look for, how we improvise the quality and performance of the plastic product, what are the latest technology available for processing, what are the polymers, what are the additives, what are the testing requirements and all. Dr. Prashant and Mr. Prashant both they have already discussed with you. Now challenge is, ultimately the world is telling the plastic is not good. We are doing our best to deliver the best. We make their life easy. We try to make everybody's life very healthy, happy, and plastic is doing a lot of things for that. But unfortunately, they are not comfortable with plastic. And everywhere we are listening a word, no to plastic. Our boss is telling it is not no, it is KNOW, no. We have to now go to that no to that no. Dr. Prashant told about various additives to be used for the mechanical recycling specifically. Being a Gujarati, I will try to quote the one line from our Adi Kavi Narsi Mehta. Naam Rup Jujwa Juda, Ante to Hemnu Hem. The meaning is that when you do anything with the gold, you make any shape, you add anything, you pollute or you degrade it, but after all the gold after all you will get gold as a gold. And same is with the plastic even. If we have a right type of technology and right way of handling it, probably we will come up with the good solutions and we will support the world in a very beautiful way. The question is to those they are always blaming plastic. Are they really need plastic? And definitely they need plastics, because out of 17 sustainable goals defined by United Nations, SDG 2, SDG 6, SDG 7, SDG 13, 4 goals are there because of plastic only. हम अपने आप को डिफाइन करते हैं जब somebody is aggressively go against the plastic. Plastic people are always in a defensive mode. कि नहीं भाई हम तो अच्छा करना चाहते हैं, हम अच्छे हैं. No, already we are doing. जब SDG 2 की बात करेंगे, zero hunger without plastic packaging, you are not able to meet out that goal. When you are talking about the clean water and sanitation, किसी ज़माने में बोला जाता था, आर यू गोइंग टू इंडिया, बी अवेयर ऑफ द वाटर. डेफिनेटली जो भी यूरोपियंस आते थे, इंडिया में पानी खराब है करके बोलते थे, आज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एवरीवेयर यू आर गेटिंग पैकेज वाटर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लास्टिक. एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, ईवी की बात करते हैं. आप बैटरी की वेट से ज़्यादा प्लास्टिक कंपोनेंट यूज़ करके ईवी व्हीकल को लो वेट का बनाने का ट्राई करते हो. यू आर नॉट टारगेटिंग कि बैटरी को हल्का बनाएंगे. हम चाहते हैं कि प्लास्टिक यूज़ करेंगे एंड व्हीकल का वेट कम करेंगे. दैट इज़ व्हाट वेयर SDG 7 के लिए बात करेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट एक्शन, जो क्लाइमेट के लिए चाहे प्लास्टिक को ज़्यादा क्लाइमेट वाले बदनाम करते हैं. वी आर नॉट विद गुटखा पैकिंग. हमने उससे कोई मतलब नहीं, कोई गुटखा बेच रहा है प्लास्टिक में पड़ेगा, हमने तो नहीं बनाया उसके लिए. बट समबडी इज मिस यूजिंग, यू कैन स्टॉप दैम, नॉट प्लास्टिक. तो क्लाइमेट एक्शन की जब बात करेंगे तो डेफिनेटली प्लास्टिक उसमें काफ़ी हद तक लो कार्बन फुटप्रिंट देता है, काफ़ी चीज़ों को मतलब हेल्पफुल करता है. हम लोग प्लास्टिक डिफेंडिव नहीं रहना है. हमारे पास में भी बहुत सारे पॉइंट्स है वेयर वी कैन टेल टू द वर्ल्ड, यस प्लास्टिक वाकई में वर्ल्ड को हेल्प कर रहा है. कोविड में सबने देखा, माना, समझा, पर फिर भी उस लेवल पे प्लास्टिक इंडस्ट्री उसको बूम नहीं बना सकी. यस, बिकॉज ऑफ वी प्लास्टिक पीपल यू आर देयर इन द वर्ल्ड. बट एनीवे,
मैकेनिकल रिसाइकलिंग की व्हेन वी आर टॉकिंग, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है कि मैच्योर नहीं हुई है टेक्नोलॉजी कुछ लेवल तक रिसाइकलिंग की, और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जैसे डॉक्टर प्रशांत बता रहे थे कि एडिटिव्स का यूज़ करें, तो वो एक्सपर्ट नहीं है इंडस्ट्री के पास में कि उन्होंने जो भी ज्ञान दिया उसका सुचारू प्रयोग कर सके रिसाइकलिंग, मैकेनिकल रिसाइकलिंग करने में. दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग मैकेनिकल रिसाइकलिंग यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ फीड इज़ दैट, उसमें क्या एडिटिव्स ऑलरेडी डाल चुके हैं और आप कौन से एडिटिव डालोगे. तो वो एडिटिव केमिस्ट्री इज़ अ प्रॉब्लम, इट्स अ चैलेंज टू इम्प्रूवाइज दैट थिंग. डेफिनेटली एक्सपर्ट लाइक प्रशांत एंड स्टूडेंट्स उनके वहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे सिपेट में भी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग करना चाहते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है. इजी रास्ते और ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, इंडस्ट्री इज पेइंग ऑन दैट एरिया. तो ऐसे एक्सपर्ट्स अभी आप हमारे कंट्री के पास में नहीं है कि जो इफेक्टिवली विथ गुड नॉलेज ऑफ एडिटिव्स प्लास्टिक रिसाइकलिंग को ज़्यादा एनहांस कर पाए. सो अभी का जो चैलेंज है, क्योंकि वी हैव ए क्लस्टर देयर इन दोराजी, they are working very nicely for the mechanical recycling since very long, but if you will go there and see the condition of the worker, काफ़ी poor है compared to those they are manufacturing polymers, those they are doing virgin polymer के साथ में काम करते या processors है, उनके कंपेयर में the workers those they are working with that particular industry in दोराजी cluster is not good. तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि हम लोग उसको इतना अहमियत नहीं दे रहे. 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में होता है पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग में, और बहुत मुश्किल से 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में मिलेगा. तो दैट इज़ अ चैलेंज. पीपल आर नॉट रेडी टू पुट लॉट ऑफ मनी ऑन दैट एरिया, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री में यही प्रॉब्लम है कि हम वर्ल्ड के इश्यूज़ को तो समझ जाते हैं, बट हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू पुट मनी ऑन दोज गोल्स व्हाट डेवलप कंट्रीज आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. तो मोस्टली ओपन लूप रिसाइकलिंग कर रहे हैं हम लोग. बॉटल से प्लास्टिक बॉटल, पेट बॉटल से फ्लीस और कारपेट फाइबर बना रहे हैं. बैग्स वगैरह से डेक और फैंस के लिए बैकयार्ड की प्रोडक्ट बना रहे हैं. बट डाउन साइकिलिंग हो रहा है, एंड मोर अप्रोप्रिएट ओपन लूप रिसाइकलिंग का वो पार्ट है जहाँ पर लैंडफिल से जाने से बचा रहे, बट लो रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट बना रहे. रिसाइकलिंग को अगर थोड़ा डिटेल में समझना चाहे तो प्राइमरी रिसाइकलिंग है, सेकेंडरी रिसाइकलिंग है, टर्शरी है, and waste to energy is a method of recycling. प्राइमरी हम लोग, क्योंकि इंडियन कल्चर इस टाइप का है कि वी आर डूइंग प्राइमरी रिसाइकलिंग ऑलवेज, रीयूज़ करना हमारा कल्चर का पार्ट है. एक प्लास्टिक की पन्नी आएगी या तो पानी की बोतल भी होगी तो हमें उसका मल्टीपल यूज़ करते हैं. ऐसी जो लोकल में बेचते हैं वो लोग पेट बॉटल का यूज़ करते हैं, पानी की भरी हुई बॉटल. हालांकि वो डेंजरस है क्योंकि उसकी थिकनेस इतनी कम है, कई बार वो फेल भी होता है प्रोडक्ट, but people are using. So that is what we are doing. Secondary recycling is a mechanical recycling, जहाँ पर downgrade होता है, material properties are getting deteriorated somewhere, and low requirement, performance requirement applications में we are using. Then advanced recycling, जिसके लिए आज मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी बहुत, and waste to energy. I am not in an opinion to go for the waste to energy from the plastic. रिसोर्स आर लिमिटेड. फॉसिल फ्यूल से हम आजकल प्लास्टिक बना रहे हैं, और उस प्लास्टिक को जला के अगर हम एनर्जी बना लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं. सोलर एनर्जी फ्री मिल रही है, उसी को यूज़ करना चाहिए रादर देन पुटिंग दिस प्लास्टिक टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी. सीमेंट क्लीन में यूज़ हो सकता है, हम कर भी रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे इन माई ओपिनियन. इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बट probably all of you are agreed on that part कि yes, we have a limited fossil fuel source where limited possibility of producing plastics, and then finally we have to go with the bio-based plastics
जो वर्ल्ड हंगर से तड़प रहा है, जहाँ पर काफ़ी लोग भूखे सो रहे हैं, वहाँ बायो बेस्ड प्लास्टिक बनाना ज़्यादा चैलेंज है। तो बेटर है कि वी हैव टू think on this particular part where we can save these resources. सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, क्लोज लूप की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी बात हो रही है। मल्टीलेयर प्लास्टिक सबके लिए चैलेंज है कि जहाँ पर रिसाइकलिंग हमेशा चैलेंज रही है कंपेयर टू ए सिंगल सोर्स ऑफ मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं, बट वो भी कॉमन वेस्ट स्ट्रीम में जा रहे हैं, एंड दे आर अगेन क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ चैलेंज टू हैंडल इट। सो केमिकल रिसाइकलिंग और एडवांस रिसाइकलिंग के बारे में ट्रेंड जा रहा है। स्लोली वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया। Several technologies are available which usually involves the chemical processes, unlike the physical processes used in the mechanical recycling. क्या बेनिफिट है उसके? एडवांस रिसाइकलिंग, if you will talk about the advanced recycling, definitely the first and foremost requirement is to reduce the plastic waste. That is also happening. The application, bottle to bottle application or food grade application, where FDA, FESA compliance is required, this is one of the best possibility where we can do it. Definitely people are doing with the mechanical recycling using SSP or LSP, and they are also claiming the bottle to bottle PET recycling is possible, and people are getting certification for that also. But chemical recycling will give medical or food grade packaging possibilities after recycling. Hard to recycle plastics, specifically for the MLP, this is one of the most comfortable technology available today. It gives the virgin quality plastics. Why it is advanced? Because it is making the polymer back to their basic chemicals or molecular component. Because for the performance requirement, we are adding lot of things. Either it's the fillers or additives or any other things, colorant and all. But finally, when we want to use it once again, we are always interested in that the polymer should be in the virgin nature, so that we can do lot of things with it, and once again we can use as a virgin polymer. So this possibility is possible because of advanced recycling. जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, थर्मोकेमिकल रिसाइकलिंग है, वहाँ पर एक थर्मल डिग्रेडेशन, जैसे PMMA वगैरह को हम थर्मली डिग्रेड करके MMA को प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन द केमिकल रिसाइकलिंग फॉर द मिक्स वेस्ट प्लास्टिक स्ट्रीम एंड सिंगल प्लास्टिक स्ट्रीम. When you are talking about the mixed plastic stream, you have a cracking and gasification. Different companies like Cipet and other companies are doing. Advanced recycling, why we are looking for? Because mechanical recycling की जो limitations है, उसको हम address करना चाहते हैं. And when we are talking about that, we have a different technology available. It is dissolution, enzymolysis, solvolysis, and pyrolysis, and so on. Let us talk about the pyrolysis, thermal decomposition without oxygen, which is suitable for the polyolefins and polystyrene, which can handle mixed and hard to for hard plastics,
It is a costly technique comparatively. Depolymerization, break into the monomers, all polyester types, mean जिसका एडवांटेज है क्वालिटी अच्छी मिल रही है, एंड कॉन्स है प्योर स्ट्रीम चाहिए. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिजोल्व विद सिलेक्टिव सॉल्वेंट एज डॉक्टर प्रशांत टोल. बॉटल बैग्स एंड कंटेनर्स के लिए यूज़ करते हैं. नियर टू वर्जिन क्वालिटी वहाँ पर मिलती है. मुझे पर्सनली डिजोल्वोलिसिस ज़्यादा पसंद आता है. आई डोंट नो व्हाई, बट I like to work on this particular area as a Cipet, and our Director General is also looking for such type of solutions from Cipet. But chemical management is one of the challenge in this particular technology, because solvent extraction, recovery, that is a big challenge in that. And then we have a mechanical recycling, which is cheap but have a limited scope. Very common but has got a lot of challenge, because Pali is one area in Rajasthan where lot of PMMA recycling is happening without knowing which type of methodology they are using. Collector Pali once approached us at Jaipur that they are creating lot of pollution. The only thing, they are using a very crude method of doing this pyrolysis, and because of that the fumes and toxic gases are released and liberated into the environment, and that is a big challenge. But if it can be handled systematically with a scientific method, proper reactors and all, and scrubber and all, this will give the better yield and environment friendly possibilities to handle the PMMA waste. To our surprise, most of PMMA waste in the developed country is going to the landfill. That is a big opportunity for the Indians. But anyway, as Prashant told, and as we came across the various type of custom assignments and all, definitely in this country, importing waste is a big challenge. Anyway, there are units in Kandla. They are converting this waste and sending back to the country of origin. But again, waste is always a challenge for this country. Chemical recycling of PET काफ़ी पॉपुलर रहा है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. नासिक में शायद कोई कंपनी उसमें कर रही है, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है. पॉसिबिलिटीज़ क्या है उसकी अगर बात करें, और क्या क्या आपको मिलेगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हाइड्रोलिसिस, जैसे प्रशांत अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर रहे थे, ग्लाइकोलिसिस वन ऑफ द वेरी पॉपुलर थिंग्स, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस आर अवेलेबल where you are getting the different basic ingredients which can be again used to make further virgin quality PET material. Very recently people are coming up with the electroreductive PET recycling methodology. जिस मेथोडोलॉजी में एक इलेक्ट्रॉन की लिबरेटेड सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है, एंड देयर द लो वोल्टेज मीडिएटर इज यूज एट द रूम टेम्परेचर. दिस कैन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन हैपन. लो एनर्जी सिलेक्टिव है पॉसिबिलिटी उसकी, क्या करना चाहते हो. अनक्लोज लूप रिसाइकलिंग है, टीपी एंड ईजी प्योर फॉर्म में आपको मिलता है. Currently emerging technology है, lab scale technology है, but some university in US they are working on that, and they have a good hope कि in future probably this may be the one of the leading technology for the PET recycling. Glycolysis, methanolysis वगैरह very popular technologies है PET recycling की. जहाँ तक बात करें, अगेन सॉल्वोलिसिस की मैं बात करूंगा बिकॉज मुझे थोड़ा उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है. इट्स अ कटिंग एज केमिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द डीपोलिमराइजेशन प्लास्टिक यूजिंग द वेरियस सॉल्वेंट.
Depending upon the solvent and plastic type, solvolysis can be categorized into hydrolysis using water, alcoholysis using alcohol, and aminolysis using amines, and so on. It restores the raw material and you can get the polymer back from the waste polymers. This is solvent based recycling method, solvolysis we can say. Pre-processing is required, plastic waste को clean किया जाता है, and then dissolution with the solvent. Then we will go with the purification for the removal of impurities and contaminants from it, and precipitation finally, and solvent recovery, which is a challenge, and people are working on that. Based on that, we are getting a recycled resin, which is almost virgin quality material. The methodology is suitable for various plastic like ABS, PC, PA, PET, PBT and PVC. Challenges है उसके अंदर, ऑप्टिमाइजेशन की नीड की चैलेंजेस है, एनवायरनमेंट सेफ्टी क्योंकि सॉल्वेंट यूज़ होता है, केमिकल्स यूज़ होता है. सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक वायबिलिटी है, एंड स्केलेबिलिटी इज़ वन ऑफ द इशू एसोसिएटेड विद द solvolysis process. Selection of appropriate recycling technology. When we talk about the recycling technology, apart from this mechanical recycling, if we will go by the input material types, multi-layer packaging, solvent dissolution is one of the available applicable technology. Pyrolysis is one. We have a small lab scale setup there at Cipet also, where we make py oil and syngases. PET is solvolysis is suitable for PET also. For PP, pyrolysis and co-gasification is the technology available. For polystyrene, pyrolysis, co-gasification, dissolution are the technology available. Again for the PE, pyrolysis and co-gasification. For mixed plastic, pyrolysis, co-gasification. For thermoset, specifically epoxies and PU, dissolution is one of the possibilities. PLA, nylon 6, hydrolysis and depolymerization technology. LDPE, co-gasification. All olefins generally co-gasification, and pyrolysis is one of the possible way to handle the recycling. For WEEE, co-gasification and pyrolysis, because ABS and other things are involved in that. Cellulosic plastic co-gasification is one of the possible technology. PVC, pyrolysis, co-gasification, and vinyl loop is the technology available with us. As the technology is little costly compared to the mechanical recycling, very lab scale facilities are available somewhere in the various educational institutes, but commercial facility is not there. One facility is available at Nasik, but that gentleman is supplying entire production after doing so to the Puma, and in Europe or in the developed country like US and all, recycled PET is used there at a premium price. Our country is always looking for the lower possibility of the prices and all, economical viability of material. We have our mindset, the material which is recycled should be with a lower price compared to the virgin polymer manufactured by the any polymer manufacturing setup. In Europe, because that 20%, 30%, 40% as per the SDG goals and all, they are paying premium prices for that and purchasing that, and they are proud to use that recycled material, and they are showing, yes, my Puma shoes is 20,000 rupees because I have recycled PET used in that. So that is the mindset, the Indian mindset and the developed country mindset. So definitely this technology, okay, no doubt, we are not able to pump it in our country, but definitely the developed countries are looking for that, and we have possibility to work on these technologies. We should come up with some or other type of technology, and we try to cater the need of the world, because very few startups are available
across the country working on this area. Even in Europe also, it is also a pilot scale facility available. Big companies like DuPont and others, they are supporting that. One day will come, definitely Reliance or IACL and others, they will also start supporting Indian startups and all for this technology. This is all about my presentation about the advanced recycling, because this topic is not discussed in most of the recycling or that type of seminars and all. People are generally talking about the mechanical recycling much, because that is probably more mature technology available in the Indian industry. So by giving this presentation, my requirement is that some or other company definitely we should think about to effective way of going with the chemical recycling technology. As you all know about the Cipet, Cipet is a institute working under the Ministry of Chemical and Fertilizer. We are located across more than 40 locations in this country, and we are supporting plastic industry in various domains. As it part of our technical support services, we do a lot of third-party inspection and quality assurance services, third-party quality assurance services specifically. And we have state-of-art laboratories across the country, and many of you might be taking services from the Cipet. Specifically, when I talk about the, as Sri Sanjay sir told me, some of you are actually interested to know about our test specimen mold, which is at par with hexagon mold, which is very costly, available from the European origin. We are supplying that mold to the industry with 1/10 of the cost of the hexagon mold and with a similar material. They are using Stavex and MX, we are definitely using Stavex and MX. They are using Hasco inserts and other things, we are also using the same insert from the Germany. They are using all international machine, Makino and you can say other machines, CNC machines from the European origin, Charmills and all. We are also using same machines with the same accuracy. We are manufacturing that mold with Indian brain and Indian labor. Unfortunately, in one of the tender, we lost the business because we are at the low price. That is the scenario of Indian industry. But MNC, actually they want to purchase some mold, and we have also quoted for that. Our cost was around 10 lakhs rupees for 12 inserts and all, and we were not considered because some of the decision maker, they told that no, how it is possible when hexagon is charging 1 CR. So that is what happening. You all are requested to visit us at Cipet Ahmedabad at Vatva. You can have a look on that particular molds also, and we are supporting all those they have purchased from the hexagon and want some or other type of maintenance services on that mold. Okay, we are doing that, and we have in past done for the few companies here in Gujarat. So that type of service is also possible with the Cipet, and you can always take advantage of this government of India setups and investment on this particular area. So thank you very much. Thank you, sir, for an insightful session. I request Mr. Sanjay to felicitate him with a memento.